let us. Give me a throat lozenge out of the sugar bag, front pouch. Throat lozenge. Those little green things. Let's recite together, please, the Guru Bhagvatams. Namah Krishna Padaya, Srimati Bhakti Vedanta Swami Namade, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pashakriti Sutarine Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurundritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Yena Bhutale Swayam Rupa Padamaniam Dadanti Swapadartikam Vandeyam Shri Pratamalam Vansham Sri Rupam Sagadatam Sagana Ragadatam Natam Stam Sridhaiva Radvaitam Savritam Parijana Saitam Sri Radha Krishna Badam Sagana Tam Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagaptai Gopika Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Kapta Kanchana Kandite Vrishabhanu Sudadevi Brahmamai Haripare Jagabha Karibascha Kripa Sindhu Bhavata Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Lord Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm going to repeat from one of the previous letters because it's so important. पिछले लेटर से महाराज जो है पत्र से अभी वापस रिपीट करेंगे जो पिछले बार लिया था उसी से थोड़ा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण था वो. This is 1973. ये 1973 है इसमें. I was in St. Louis, Missouri, central United States at the time. उसमें सेंट लुइस में थे. Prabhupada says, because I didn't write to Srila Prabhupada unless I had some initiations to send in. महाराज जो है प्रभुपाद जी को हर समय नहीं लिखते, सिर्फ तब लिखते जब महाराज के पास कोई इनिशिएशन देने के लिए भक्त हैं. Even if I had a question, I'd wait till the next initiation letter. तो महाराज के पास कोई प्रश्न भी होता था तो महाराज वेट करते थे अगले रिप्लाई है प्रभुपाद जी का. तो पिछले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने नाम दिए हैं भक्तों के. I'm repeating, I did read this for you before, but I'm repeating because it's so important. तो मैं ये दोबारा जो है पुनः बता रहा हूँ उनकी बहुत महत्वपूर्ण है. The word initiation means to begin, not that when he's initiated, a disciple becomes slack. दीक्षा का अर्थ है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ करना, ना कि जो है भक्त ढीला पड़ जाए उसके बाद. This is a really heavy point because many times devotees manage to survive in Krishna consciousness for 10 years. They think, I'm fine, just see, now I'm advanced. जब कोई व्यक्ति जब भक्त 10 वर्ष हो जाते हैं इस मूवमेंट में तो वो लगता है कि नहीं मैं बहुत ही एडवांस हूँ, मैं बहुत ही उन्नत भक्त हूँ. Vaishnavas never think like that. Never. A real Vaishnava cannot even think like that or feel like that for half a moment. एक जो असली वैष्णव है वो आधे सेकंड के लिए भी ऐसा सोच नहीं सकता कि मैं एक बहुत ही उन्नत वैष्णव हूँ. And a real Vaishnava must always be imbibed. You know, imbibed means saturated with Vaishnava qualities, good qualities, tolerance, forgiveness, kindness, love. तो एक असली वैष्णव जो है इन गुणों से जो
तितिक्षवा और जो है सबके प्रति मतलब प्रेम का भाव रखना, उससे आप्लवित रहता है। Advancement in Krishna consciousness absolutely cannot be counted according to how many years you've been initiated. Cannot be. That is a fantasy, a dangerous fantasy. आध्यात्मिक जीवन में प्रगति इस पे नहीं निर्भर करती कि हमने कितने वर्ष भक्ति में निकाल दिए हैं। ये सिर्फ जो है मनोकल्पना है। There are some 35, 40-year devotees कुछ 35-40 वर्ष पुराने भक्त हैं that are not actually advanced in Krishna consciousness because they've forgotten about the necessity of patience, tolerance, love. They've forgotten. तो वो जो है वो भक्ति में अभी प्रगति नहीं की क्योंकि वो भूल रहे हैं कि धैर्य और तितिक्षवा जो टॉलरेट करना ये सब गुण को भूल चुके हैं। Forgiveness, mercy, they've forgotten. And what kind of Vaishnava is that? दूसरों को माफ करना और उनके प्रति प्रेम भाव रखना ये सब भूल गए हैं। Flowery words of the Vedas, simply threw it out, you know? ये केवल जो है दिखावटी मतलब वर्ड्स हैं। Because Krishna says to Arjuna, don't pay attention to any of the flowery words of the Vedas. कृष्ण जो है बताते हैं गीता में अर्जुन को कि जो है फ्लावरी वर्ड्स वेदास के फ्लावरी वर्ड्स पे अट्रैक्ट मत हो। But these are the fundamental precepts of Krishna consciousness, the foundation of how to be a Vaishnava. Love, compassion, tolerance, mercy. Absent those things, that person is not advanced, not at all. तो ये जो है ये सारे गुण प्रेम मैत्री और ये सब जो गुण हैं ये सब कृष्ण भावनामृत के फाउंडेशन है, रूट में है, तो ये इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। Always kind to others is required for advancement. हमेशा दूसरों के प्रति कंपैशन का भाव रखना बहुत जरूरी है। And at the same time, that person might be able to speak philosophy very nicely after so many years in Krishna consciousness. अगर वो भक्त बहुत ही अच्छा फिलॉसफी बोलने में हो, They might be expert teacher. वो बहुत ही दक्ष अध्यापक भी हो, They might be able to give really interesting, बहुत ही सुंदर प्रवचन भी दे सकता है वही वो भक्त, enliven all the devotees. और सभी भक्तों को मतलब But sometimes they're keeping a double standard because they forsake these Vaishnava qualities. तो जो है वो इन वैष्णव गुणों को नहीं पालन करते। So, because there's jnana and vigyan. क्योंकि ये जो है एक तो ज्ञान है और दूसरा विज्ञान है। Gyan means the knowledge. So everybody who's been studying Prabhupada's books, especially if you've been studying for decades, you have some knowledge, certainly. ज्ञान मतलब जानकारी जो भी हमें उपलब्ध है। The challenge is, where's the vigyan? What about the vigyan? लेकिन जो रियल चैलेंज है वो है कि विज्ञान कहाँ है। Vigyan means the practical application. It has to be applied. It can't be just flowery words. विज्ञान मतलब जब उस ज्ञान को जब हम जानकारी को अपने जीवन में उतारें तब उसे विज्ञान कहते हैं। This is the challenge for those who survive in Krishna consciousness and become managers and all that. It's very nice, very nice. चुनौती है कृष्ण भावनामृत में जो भक्त रहते हैं और जो बड़े-बड़े मैनेजर बनते हैं उनके लिए। Prabhupada told us, don't be surprised who leaves. प्रभुपाद कहते हैं कि कभी उनके भौचक्के मत हो यदि कोई छोड़ के जाता है कृष्ण भावनामृत। Be surprised who stays. हाँ, हमें आश्चर्य तब करना चाहिए जब कोई भक्ति में रहता है। It's very profound if you think about it. ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है हमें इस पे सोचना। It's great if somebody can be talented as a teacher, talented in the philosophy, learned in the philosophy, all these things for decades. That's wonderful. बहुत ही अच्छा है यदि कोई बहुत अच्छा दक्ष अध्यापक है, दर्शन प्रस्तुत कर सकता है। But can they become soft-hearted? पर क्या वो कोमल हृदय के हो सकते हैं? Can they be tolerant and compassionate? क्या वो सहिष्णु और merciful? दया भाव रख सकते हैं? These are required to go along with the knowledge. Being a good teacher of the philosophy is not enough. ये सब गुण चाहिए हमें ज्ञान के साथ साथ सिर्फ जो है दर्शन प्रस्तुत करना ये सब संपूर्ण नहीं है। So you people and listeners, everybody, net listeners, everybody, download that please. तो आप जो जितने भी श्रोतागण हैं इस चीज़ को एकदम अपने हृदय में उतार लीजिए। Some of you will be able to remain in Krishna consciousness तो आप में से काफी कुछ भक्त जो है भक्ति में रह पाएंगे आगे भी। for 30 years or more. Why not? 30 साल या उससे अधिक।
You have to dive deep into hearing and chanting, that's all. तो आपको इस सुनने और जो है श्रवण कीर्तन में और गहरा जाना है And avoid Vaishnava aparad. और वैष्णव अपराध को First and बचना है। foremost. First and foremost. सबसे प्रथम पूर्वक वैष्णव अपराध से बचना है। So, the number of years is not what makes somebody advanced. केवल भक्ति में कितने वर्ष निकाले उससे कोई व्यक्ति कोई एडवांस नहीं कहलाता। Sometimes that mistaken calculation is made in our society. कभी कभार ऐसी गलती हमारी सोसाइटी में भी हो गई है। Vigyan, let's look at the Vigyan, please. तो हमें जो है विज्ञान के प्रति ज़्यादा ध्यान देना है। Let's look at Krishnadas Kaviraj Goswami. जैसे हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी में Devotees asked him to write about Ashtakala Leela, Krishna's pastimes with Radharani and the gopis at Radhakund. तो भक्तों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है अष्टकाल लीला के बारे में लिखिए जो राधा रानी और कृष्ण और गोपीज के साथ साथ जो लीला हुई है। So he replied, yes, I can try to write something तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं कुछ लिखने का प्रयास कर सकता हूँ just to satisfy the Vaishnavas. That's Krishna जो consciousness. है वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। But he says, I'm just a clown. This is a direct quote, what he wrote in a preface to one of his books, booklets. They're little booklets. तो उन्होंने जो है लिखा है कि मैं एक सिर्फ Radha and Krishna's pastimes, small books. You mentioned clown. Clown. You don't know what is a clown? Funny guy. You know, they usually makeup and funny hats and floppy shoes and all that. जोकर की भांति हूँ मैं इस ग्रंथ को नहीं लिख सकता। They had those even 5,000 years ago. They had the it's called the court gesture. The kings, they had these clown. The kings. तो ये जो इस प्रकार के जो जोकर टाइप जो पहले भी लोग होते थे 5,000 वर्ष पूर्व और राजा इन सबको रखते थे अपने। They had to be able to outsmart the king. तो वो जो है राजा को प्रसन्न करने के लिए ये सब करते थे। I'll just tell you, this is an interesting history. तो एक महाराज बहुत ही रोचक घटना बताएंगे अभी। There was one king, and his in medieval times they call him the court gesture. Gesture means the funny guy, the clown. तो मतलब पुराने समय में बता रहे थे कि एक राजा थे उसके दरबार में एक जोकर। This is told by Prabhupada, that's why I'm repeating ये it. प्रभुपाद ने बताया इसमें तो महाराज रिपीट कर रहे हैं। So, the king's clown had just built himself or got a brand new house. तो जो राजा के दरबार में जो जोकर था उसने एक नया एक घर बनाया था अपना। The king said, I need to pass stool in your house. You know, I need to go now. So I need to go to your house to pass stool. तो राजा ने जो है उसको जोकर कहा कि मैं तुम्हारे घर में जाके मल त्यागना चाहता हूँ मैं अभी कहीं। You know this story? And the court gesture means the funny guy. तो वो जो हास्यप्रद करने वाला जो व्यक्ति था Said yes, but not one drop of urine. तो उसने कहा ठीक है आप आ सकते हैं मेरे घर में लेकिन एक बूंद भी So to defeat the king, he had to be really sharp, you know. तो उसने इसी प्रकार से जो है जो राजा को पराजित कर दिया। Anyways, that's Vedic culture. तो ये जो है वैदिक कल्चर के बारे में बताने वाला संस्कृति के बारे में। So initiation is the beginning. We really got to understand that point. तो दीक्षा जो है वो आरंभ है इस चीज़ को हमें बहुत हृदय से समझ लेना है। And I spoke before about the attack on New Vrindavan by the demons. तो इसमें जो है न्यू वृंदावन पे जो आक्रमण हुआ था उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं महाराज पहले ही। And so Prabhupada's saying what Krishna says in Gita. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। To Arjuna he says, declare to the world that my devotee will never be vanquished. गीता में कि पूरे दुनिया को बता दो कि मेरा जो भक्त है उसका कभी नाश नहीं होगा। This is very interesting because we see that some really bad things happen to devotees sometimes, you know. बहुत ही रोचक है क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि भक्तों में कभी-कभार दिक्कतें भी आती हैं। Now currently we see that really fixed up devotees, saints even like Bhakti Swami, die from corona and other things happen sometimes.
तो हम अभी भी देख सकते हैं बाहर किस प्रकार जो है भक्त लोग भी इस कोरोना के कारण, जैसे भक्ति चावल महाराज जैसे संत व्यक्ति भी जो भक्त हैं उनको भी दिक्कत होती है. There was a famous book in the 1960s. Why did bad things happen to good people? You know. 1960 में बहुत ही फेमस बुक थी कि अच्छे लोगों के साथ बुरी This चीजें is क्यों होती हैं. everybody's doubts. Now ये सभी का जो है संशय रहता है. we have to preach vigorously when you get out in congregational preaching, because in India now there's a huge doubt. Oh, you know, Uncle Joshi was a good man, you know, he was pious, religious. What happened? Why? तो हम जब बाहर प्रचार करने जाए तो हमें इस बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि खासकर भारतीयों में ये बहुत ही बड़ा संशय रहता है कि क्यों मिस्टर जोशी जैसे लोग जो है मतलब इतने सफर करने व्यक्ति इतने पायस व्यक्ति थे. Many times they can't explain, therefore many times they blame it on God. तो वो इसको समझ नहीं पाते, इसलिए वो भगवान पे आरोप लगाते हैं. The laws of karma they do not understand, not at all, because they never heard from a Vaishnava. That's why. कर्मों की इस नहीं समझ पाते कर्मों के नियम को, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में. That's why we distribute Prabhupada's books. इसीलिए हम जो है श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथ सबको वितरित Because करते हैं. this ignorance is dangerous. तो ये जो ignorance है, लोग नहीं जानते, ये बहुत मतलब खतरनाक है. Avidya actually ruins lives. ये जो अविद्या है ये पूरे जीवन को नाश कर देता है. It's safe to say that in India today, thousands of people, their faith in the Supreme Lord is very disturbed because their Uncle Joshi died of corona, but they say, but I don't understand. He was a pious religious man. He went to the temples, you know. तो भारत में ये समझना बहुत लोगों में बहुत जल्दी भगवान पे विश्वास उठ जाता है जब वो देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई मिस्टर जोशी जो इतने मंदिर जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो कोरोना से मर गए. But Uncle Joshi, maybe he was a religious man. तो जोशी जी जो है भले ही वो जो है बहुत ही धार्मिक व्यक्ति भी. What temple was he going to? कौन से मंदिर वो जाते थे? Kali temple. कली के मंदिर जाते. What can you expect? She kills her devotees. What can you expect? तो वो तो जो अपने भक्तों को वैसे ही मार देती है, तो आप उससे और क्या उम्मीद? But the Vaishnavas, we have to surrender to the will of the Lord. You know, if somebody wants to be killed by Krishna, nobody can do anything. Prabhupada quotes that in this letter here. और वैष्णव को जो है, वैष्णव तो जो है भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान जो चाहते हैं, यदि मारना चाहते हैं, तो वो उसको. I had this discussion with in San Francisco in 1969. तो मेरी एक चर्चा हुई थी एक बार सैन फ्रांसिस्को में 1969 में. I was talking with the Rath Yatra man. तो महाराज जो है जो रथ यात्रा हो रही थी उसी में किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे थे. नाम क्या है? No, I'm forgetting his name. Yeah. The father of Rath Yatra. Jayanand, yes. He was a friend of mine, and so we were having a discussion one day about this verse from Bhagavad Gita. तो महाराज जो है जयानंद प्रभु से एक बार चर्चा कर रहे थे इस विषय में कि वो महाराज के बहुत अच्छे मित्र थे, तो उनसे चर्चा कर रहे थे कि एक वर्ष भगवद गीता पे. So I took the position that means that Krishna should be protecting the body of the devotees also. तो यही जो वर्ष अभी पहले बताया, तो उसी वर्ष पे चर्चा कर रहे थे. तो महाराज ने कहा कि फिर भगवान कृष्ण को भक्तों की शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए. But this was 1969, very early in the movement. और ये जो है 1969 की बात है, तो ये बहुत ही आरंभिक दिवस है जब इस मूवमेंट के. You know, it's not so simple. It's complicated. It's complicated. As soon as Krishna is involved, it's not simplistic. तो ये जो है कोई बहुत सीधी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. तो जब भी कृष्ण आते हैं तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. Well, there's one strange occurrence. तो इसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज एक happened in Hawaii. तो हवाई में ये घटना हुई थी बहुत ही स्ट्रेंज. There was probably a drug deal went bad, you know, because the devotees in Hawaii in the days of yore, they used to get involved with drugs a lot. तो हवाई में बता रहे हैं कैसे कि एक भक्त जो मतलब वो ड्रग डीलर के बारे में बता रहे हैं महाराज.
So it must have been a drug deal gone bad, you know. It happens all the time, you तो know. एक जो है ड्रग डीलर जो है मतलब गलत हो गया उसको The drug dealer doesn't get paid on time or something, and it turns into a total demon. तो उसको जो है ड्रग डीलर जो भी थे उसको सही से उसको लक्ष्मी नहीं दिया जो भी तो उसके कारण This वो is जो है a very strange occurrence. एकदम एक असुरिक प्रवृत्ति में आ गया था। Are you ready? तो ये आप जो है सब तैयार है इस चीज़ को सुनने के लिए? So let's say the drug deal went bad, and so the demon, that means the drug dealer who became a demon, you know. तो वो जो है गलत हो गया था उसमें ड्रग डीलिंग जो कर रहे थे उसमें कुछ गलत कर दिया था तो जो डीलर था जो ड्रग डीलर वो एक डीमन होता था। This is a little hard to swallow. Are you ready? ये बहुत ही मुश्किल है निकलने के लिए तो आप सब तैयार रहिए। It's hard to digest, but we have to look deep at it. तो ये बहुत ही मुश्किल है इसको मतलब डाइजेस्ट करना तो So the demon drug dealer came with a knife, and he was going to stab the devotee in the heart with the knife. I mean, real demon, you know. वो एकदम असुरी प्रवृत्ति में आ गया था उसने वो एक चाकू लेके आया था और जो है एक भक्त के हृदय के में डालना चाह रहा था। So the devotee who was a friend of the victim, he lurched, he jumped in front of his friend. तो जिसको वो मारने जा रहा था तो दूसरे भक्त जो उस भक्त के मित्र थे वो अचानक से सामने कूद पड़े उस भक्त को बचाने के लिए। This is strange. Are you ready? तो ये It's a strange story, but it's a true story. तो ये बहुत ही स्ट्रेंज है एक घटना लेकिन बहुत ही सत्य घटना It है। requires a lot of thought. तो इसके लिए बहुत ही हमें गहराई से सोचना चाहिए। So the friend of this devotee that had been involved in a bad drug deal, let's say, तो ये जो इसका इन भक्त का जो मित्र था जिसको वो मारने जा रहा था he jumped in front of his friend while the demon was coming at him with a knife. तो वो जो आसुरी व्यक्ति था वो जब चप्पू लेके उसको मारने आ रहा था उन भक्त को तो उनके जो मित्र थे वो सामने आके कूद गए। So he took the knife in the heart. तो उन भक्त के जो है हृदय में जो But what was he doing when he got stabbed in the heart? What was he doing? तो वो उस समय क्या कर रहे थे जब उनके हृदय में जो है चप्पू लगा? He was assuming the form of Lord Nrsingadev. वो जो है नरसिंह देव के फॉर्म में वो भक्त खड़े थे। He has his hands like this, and he was mimicking Lord Nrsingadev. He was deep in meditation, Lord Nrsingadev. और वो जो भक्त है इस प्रकार हाथ लेके खड़े थे और वो पूरे चिंतन में थे भगवान नरसिंह देव पे। So he was deep in meditation on Lord Nrsingadev, and knife went in his heart. और वो जो है पूरी तरह से भगवान नरसिंह देव पे ध्यान लगा रहे थे और उसी समय जो है वो चप्पू जो है उनके हृदय में उसे मार दिया गया। Then you could say, oh, that's terrible, then how come Lord Nrsingadev didn't protect him? ये आप कह सकते हैं ये तो बड़ा अजीब है कि भगवान नरसिंह देव ने उनको बचाया क्यों नहीं? The probability is that he was involved in too much sinful activity. He himself probably was involved in the drug deal. तो ये महाराज कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो भक्त थे वो खुद भी जो है ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थे तो इसीलिए I mean, not exactly Prahlad Maharaj, you know. तो एग्जैक्टली ये जो है प्रहलाद महाराज नहीं जैसे भक्त So नहीं थे। due to his sinful activities, he forfeited the right or the privilege of being protected by Lord Nrsingadev. Even though he was deep in meditation, Lord Nrsingadev, but Lord Nrsingadev didn't save his body. This is the point. तो महाराज बता रहे कि हम देख सकते हैं कि वो भक्त जो है उन्होंने पाप में कार्य किए थे इसीलिए वो जब सामने आए तो नरसिंह देव ने बचाया नहीं पर उसको ये प्रिविलेज था कि वो भगवान पे ध्यान लगाते हुए उसके हृदय में जो है The Lord Nrsingadev didn't save his body. I mean, he got stabbed in the heart, so he died. नरसिंह देव भगवान ने उनके शरीर को नहीं बचाया But how did he die? पर वो मरे कैसे हमें ये नहीं देखना है। Deep and intense meditation on Lord Nrsingadev. पूरा जो उनका ध्यान एकमात्र केंद्रित था नरसिंह देव भगवान के ऊपर। Do you think Lord Nrsingadev didn't appreciate that? तो आपको लगता है भगवान नरसिंह देव ने इसके बारे इसको देखा नहीं होगा? Of course he did. तो उन्होंने जरूर इस चीज को He accepted that love and that devotion. He accepted it even though उस that- प्रेम को उस भाव को जो that devotee was off somehow. He had incurred so much sinful reaction. So the point is, all that sinful reaction, poof, finished. तो जितना भी उस भक्त ने पाप में कार्य किया था वो सब एक ही बार में जब उसके हृदय में वो आघात हुआ तो सब खत्म हो गया। Then Lord Nrsingadev took him, see? और So what's the फिर bad part? भगवान He नरसिंह lost देव his को body, लेके गए। but the soul, was saved by Lord Nrsingadev. That's the उसमें क्या point. नुकसान हुआ उस भक्त का? भले ही उसका शरीर चला गया लेकिन वो तुरंत जो है भगवान नरसिंह देव के पास चले And गए। that's the conversation I had with Jayananda in 1969. ये जो है वार्तालाप हुई थी महाराज की जयानंद I को। said,
Krishna, that verse of Gita means Krishna will save the body of the devotee also. वो जो श्लोक है गीता का उसमें यही है कि भगवान जो है शरीर भक्तों के शरीर की भी रक्षा करते हैं. Jayananda said no. दयानंद प्रभु ने कहा नहीं. There's no guarantee. So I mean, कोई गारंटी नहीं है. he himself was only about a year and a half devotee, but he had a deeper understanding than I वो did. भले ही वो भी खुद मतलब एक 1-1.5 साल पुराने भक्त थे, लेकिन उनकी I was गहरी सोच थी कृष्ण भगवान. 1 year devotee, 1.5 year devotee myself, you know. मैं भी जो है 1-1.5 साल पुराना ही भक्त था. But he understood the purport. I didn't understand. और उन्होंने जो है असली इसके मतलब मर्म को समझा, लेकिन मैं Said no, Krishna does not promise to preserve the body. He told me. तो उन्होंने कहा नहीं कृष्ण ये नहीं बोलते कि मैं जो है भक्तों के शरीर की रक्षा करूँ. I was disagreeing with him. और मैं उस समय मना कर रहा था जैनों को, नहीं ऐसा नहीं है. Years later, we see how many devotees died in car accidents. One plane was full of devotees, not full of devotees. There were about 6 devotees in a plane. You heard about it? Up in the Himalayas. तो सालों बाद हम देखते हैं किस प्रकार जो है भक्त कार के दुर्घटना में मरते हैं, या फिर एरोप्लेन से जाते हुए की दुर्घटना में जो है काफ़ी सारे भक्त One जान दे देते हैं. sinless little girl about 7 years old, and congregation members also sinless, fixed up congregation members. So about 7 devotees died in that plane accident. तो वो जो एरोप्लेन के एक्सीडेंट में महाराज बता रहे हैं दुर्घटना में, उसमें एक कांग्रेगेशन फिक्स्ड अप कांग्रेगेशन था, उनकी एक छोटी बेटी भी थी 7 वर्ष की, वो भी जो है इसमें. Where did they die? They died within the holy dham. They were within the mandal of the holy dham up in the Himalayas. तो वो जो है हिमालयस के जो मतलब वहाँ पे जो धाम है वहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा. Remember, the holy dham is not just where the deity is located, so the whole area is sacred, you know. तो वो जो धाम है वो केवल वो नहीं है जहाँ पे सिर्फ विग्रह स्थित है, वहाँ पूरी जगह वो जो है पूरा. After all, in the Gita, Krishna says, of mountains I am the Himalayas, so the Himalayas are also worshipable. तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सारे पहाड़ों में मैं जो हूँ हिमालय पर्वत हूँ. What's the bad part? तो उसमें क्या गलत हुआ उनके साथ? They all went back to Godhead. तो वो जो Of course, सब भगवत धाम चले गए. naturally, they had a little time before the plane crashed. तो हम देख सकते हैं बाहरी रूप से भले ही वो एक एरोप्लेन की दुर्घटना में मरे हैं. They could see the plane was going to crash. वो देख पा रहे थे कि जो है ये No doubt, they were probably shouting the holy name. तो इसमें कोई संशय Chanting नहीं, loudly. वो जो है जोर-जोर से हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे. I was on a plane once in. This is too juicy, can't pass it up, you know. तो महाराज बता रहे मैं भी एक बार जो है एक हवाई जहाज में जा रहा था. I was on a plane on my way to India. तो मैं भारत की ओर आ रहा था हवाई जहाज में. The fueling stopover was in Tokyo, Japan. तो वो जो है उस फ्लाइट का एक स्टॉप था टोक्यो जापान में रुक के आने की. There were only 3 devotees on that plane. Me, my brother, and another devotee were on that plane. 3 ही भक्त थे उस हवाई जहाज में, महाराज के भाई और एक और भक्त. We were on the way to India for the pilgrimage, for the Mayapur Vrindavan pilgrimage. तो हम जो है मायापुर pilgrimage में जा रहे थे. There was a typhoon going on in Tokyo. तो टोक्यो में उस समय एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ था. We were in this big plane, this giant plane, on a huge plane, you और know. हम जो है एक बहुत बड़े इस हवाई जहाज में थे. The winds were blowing at hurricane force. और जो है हवा बहुत ही तेज चल रही थी, तूफान आया उस प्रकार से हवाएं चल रही थी. The plane was going like this, like a toy. तो जो हवाई जहाज है पूरा एक खिलौने की तरह हिल रहा था ऊपर. It was rocking like a toy. पूरा हिल रहा था वो ऊपर नीचे. Huge plane, you know. बहुत बड़ा जो है हवाई जहाज था वो ऊपर हिल रहा था. There was ice on the wings. तो उसके जो पंख थे उसके ऊपर. It was हवाई जहाज winter there apparently. Apparently it was winter. सर्दी का समय था. In Tokyo at that time it was winter. उस समय टोक्यो में सर्दी का समय था. There was ice on the wings. I had heard that a plane should never be flown when there's ice on the wings. Well, they had de-icer going, you know, they have chemicals to take the ice off, but there was visibly ice on the wings. तो उसके जो हवाई जहाज के पंख पे पूरे बर्फ जम गई थी. मैंने सुन रखा है कि जब एक बार बर्फ जम जाती है तो हवाई जहाज उड़ नहीं सकता. लेकिन उन्होंने कुछ केमिकल डाल के उसको हटाने की. So the plane is sitting there just rocking. वो जो है हवा में जो है पूरा हवाई जहाज हिल रहा है खिलौने की तरह ऊपर नीचे. The ice is on the wings. और उसके पंखों पे जो है वो जम गई है. And
There was no sign that the storm was letting up at all. The wind was और ऐसा blowing. बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रहा था कि अब ये जो तूफान है ये रुकने वाला है। I swear, it was a single-story airport. तो वहाँ तारे में देखा कि वहाँ पे एक ही माले का जो है एयरपोर्ट था। I would swear that the wind was blowing so hard that the cement blocks that the airport building was made of appeared that the whole building was moving. I don't know, but that's what it looked like. तो ऐसा लग रहा था कि पूरी With जो है hurricane. एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है वही पूरी हिल रही थी। So then we'd be sitting there for at least an hour. तो हम लोग जो है वहीं पे ही बैठे थे एयरपोर्ट पे 1 घंटे के लिए लगभग। Plane couldn't take off because the the air commanders, they wouldn't allow because it was dangerous. तो वो जो हवाई जहाज है वो उड़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि जो है वहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह थे उन्होंने मना कर दिया था कि अभी So at least an hour or hour and a half we'd been sitting there waiting for the pilot was waiting to get orders from the tower was waiting for the storm to blow over, but it wasn't happening. तो जो पायलट थे वो वेट कर रहे थे कि कब जो है उसको आगे दिया जाएगा कि वो हवाई जहाज को उड़ा सके, लेकिन 1-1.5 घंटा हो गया लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। Suddenly the pilot announced that it was safe to take off. तभी अचानक जो है पायलट ने बोला कि ठीक है अब हम उड़ सकते हैं। Oh, I didn't think so. I mean, what do I know about planes? The plane was still rocking like a toy. महाराज कह रहे कि मुझे तो नहीं लग रहा था अभी उड़ सकता है क्योंकि हवाई जहाज जो अभी खिलौने की तरह उड़ रहा था पूरा। Freezing ice on the wings. और पूरे दोनों पंख पे जो है बर्फ जमी And the हुई थी। plane is rocking in the hurricane winds. और जो है पूरा हवाई जहाज And the pilot हिल रहा था। declares that he's been cleared to take off. I'm thinking, my God, what is going on here? कैसे जो है पायलट ने बोल दिया कि अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं This लगा। storm was not over, और ये तूफान तो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, अभी कैसे उड़ सकते हैं? but he was taking his orders from the tower, लेकिन वो जो पायलट है वो उस टावर से ऑर्डर ले रहा था। So आदेश ले रहा था। the plane took off, तो फिर जो है वो हवाई जहाज उड़ान भरी। rocking in हिलता जो है the hurricane winds like a toy. तूफान में एकदम खिलौने की तरह हिल रहा था ऊपर नीचे। I'm thinking, boy, it's not good. तो वहाँ लग रहा था नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। And then, so we were taking off. It's supposed to be going up. Planes are supposed to be going up. तो जो है अब उड़ान भरने के बाद ऐसा माना जाता है कि जो एरोप्लेन ऊपर जाएगा। We were over the ocean now. अब जो है हम एक समुद्र के ऊपर आ गए। The third devotee said, "We're losing altitude. अब जो है जो तीसरे भक्त थे उसने कहा अब हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं धीरे-धीरे। We're not going up. The plane was going down." अब हम ऊपर नहीं जा रहे, अब हम नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। I saw that the stewardesses were white as sheets. They fly every day, more than once a day in airplanes, but I figured the stewardesses are white colored. This is not a good sign. Stewardesses were terrified. Bad sign. तो वो जो अंदर जो रहते हैं सिग्नल वहाँ पे व्हाइट कलर के, तो महाराज कह रहे हैं कि मैं बहुत बार उड़ चुका हूँ लेकिन वहाँ से तो अभी जो सिग्नल सही अच्छे नहीं थे, ये बहुत ही बुरा So I thought, we're losing altitude. The plane is going down. तो महाराज को लग रहा था कि अब हम जो है नीचे धीरे-धीरे नीचे आ रहे हैं, हमारा Maybe this is it. Maybe it's Krishna's plan for when I should leave my body. I'm not going to gamble on this one. Not going to gamble. तो मैं जो है मैं सोच रहा था कि भगवान ने शायद यही हमारा प्लान बनाया कि यहीं पे हम शरीर छोड़ेंगे। So I started audibly chanting. तो मैंने जोर-जोर से जो है हरिनाम करना शुरू कर दिया। At first I was not so loud. तो मैंने पहली बार था जब मैंने इतना जोर से जप करना शुरू किया। As it seemed like things weren't getting any better. तो ऐसा लग रहा था कि अब जो है स्थिति काबू में नहीं आ रही है। I started chanting louder and louder. और जोर-जोर से जो है जप करना शुरू कर दिया। I determined I was going to shout the holy name. If the plane's going down, hey, I'm shouting holy name. The hell with social convention. I'm shouting the holy name. तो महाराज ने निश्चय कर लिया था कि अब जो है स्थिति और सुधरने वाली नहीं है, तो मैं और जोर से जो है इसका जप करूँगा अपना। So, anyways, Krishna heard us chanting. और बता रहे कैसे जो है भगवान ने सुन लिया वो जो जप कर रहा था मैं। Miraculous. He saved personally the plane. Certainly. और भगवान ने स्वयं जो है उस हवाई जहाज को बचाया। That was a very bad situation. निश्चित रूप से ये बहुत ही बुरा स्थिति था। I mean, it was going down. It was losing altitude means going down. और जो है वो हवाई जहाज पूरी तरह नीचे आ ही चुका था समुद्र के ऊपर। Another 20 minutes it might have crashed in the ocean. और केवल जो है अगर 20 मिनट और नीचे आता तो वो
समुद्र But में here, डूब जाता Krishna है। heard the chanting. Yes, well, I'm not going to do that to my devotee. It's not the right time. लेकिन भगवान ने जब सुना जब करते हुए तो भगवान ने सोचा कि नहीं, मैं अपने भक्तों को ऐसे इस प्रकार नहीं। So I resolved that I'm going to shout. I'm going to shout louder and louder if it seems like we're going down. Hey, I'm going to shout louder and louder. The hell with social convention. मैं जो है जोर-जोर से चिल्ला के जो है जप करूँगा। But the people on the plane were appreciating. लेकिन जो हवाई जहाज में और अन्य व्यक्ति थे वो सब महाराज All को तारीफ कर रहे थे। these holy men, they're singing, they're chanting holy names of जो हमारे God. साथ कुछ संत लोग बैठे हैं वो भगवान का नाम का जप कर रहे हैं Well, Krishna heard it, और कृष्ण ने भी सुना इसके and बारे that's में। what counts. तो यही जो है So मायने रखता है। miraculously, after a few minutes, after maybe 20 minutes of this or so, or maybe even half an hour, it was quite a while, and it didn't look very good. और एकदम रोचक तरीके से जो है पूरी स्थिति जो है काबू में आ गई लगभग 20 से 30 मिनट के बाद। Then, by the will of Krishna, finally the plane started gaining altitude. भगवान की कृपा से फिर जो है वो दोबारा जो हवाई जहाज था वो अपनी उड़ान भरने लगा। I don't know what was going on in the mind of the tower controller. तो महाराज कह रहे मुझे नहीं पता कि उस जो टावर जो जिसने आदेश दिया था उसके मन में क्या चल रहा था। I can imagine what was going on in the mind of the pilot, however. लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि पायलट के मन में क्या उस समय चल रहा होगा। The pilot was probably peeing in his pants. तो जो है जो पायलट था जो उसको चला रहा था हवाई जहाज को वो बेचारा अपने We were flying into the eye of the storm. The eye of the storm means the very center of the storm. I don't get it. I can't see how that tower gave permission for us to fly into the eye of the पायलट सोच रहा storm. था कि हम एकदम तूफान के मध्य में हैं स्थित हैं इतना भयानक तूफान है तो कैसे जो है ये ऐसा बोल सकते हैं हमें उड़ान भरने के लिए। But we see it wasn't Krishna's plan for me to leave my body at that time. लेकिन हम देख सकते हैं कृष्ण का आयोजना थी कि हम मतलब उस समय जो है मैं शरीर नहीं छोड़ूं। So we see that Jayananda is right, because after that, so many car crashes, especially car crashes. तो वहाँ कह रहे मैं देख सकता हूँ इसी प्रकार जो दयानंद प्रभु बिल्कुल सही थे उसके बाद तो बहुत सारे कार क्रैशेस जो है। Oftentimes devotees trying to drive all night, like I was in a van full of devotees. We were going between states, between Oregon. We have a temple in Portland, Oregon. I was up in the next state up, Seattle, Washington, and ऑर्गन जो है एक जगह है पोर्टलैंड ऑर्गन महाराज बता रहे तो वहाँ से महाराज जो है कुछ भक्तों के साथ अपनी ड्राइव करके ला रहे थे गाड़ी को। I had a large van. बहुत ही बड़ी एक वैन थी महाराज के पास जिसको Actually, there was about 20 men and women crowded in there करीब together. 20 जो है प्रभु जी और माता जी बैठे थे। And we were driving, I don't know, a couple of thousand miles or something. तो लगभग 1000 मील जो दूर है मतलब वो ड्राइव करके ले जा रहे थे उस वैन को। From Oregon down to San Francisco. Maybe it was about 1,000 miles. I don't know. ऑर्गन जो पोर्टलैंड है वहाँ से लेके सैन फ्रांसिस्को तक वो ड्राइव करके जा रहे थे। 2,000 kilometers, right? लगभग 2000 किलोमीटर। 1,000 miles is अराउंड 1700। double. सो अराउंड जो 1700 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में वो लगभग। So we were in a crunch to get to Rath Yatra in San Francisco on time. सभी भक्त जो है बहुत ही जल्दी में थे कि हमें जो है रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में पहुंचना है सही समय पे। Danavir Maharaj, he was not a sannyasi yet, but he was the driver. तो दानवीर महाराज जो उस समय संन्यास नहीं थे वो जो है उस समय वो गाड़ी वहाँ चला रहे थे। He announced that he was feeling sleepy. तो उन्होंने बोला कि मैं जो है थोड़ा मुझे नींद आ रही है। Did I tell you this story before? यस मैम। Anyways, it's relishable. कोई बात नहीं फिर भी ये बहुत ही आनंदमय है। So he pulled over, and we were right near the train tracks. तो उन्होंने जो है एकदम जो रेलवे ट्रैक के ऊपर लाके वहाँ गाड़ी रोकी। He announced, I'm going to take a 10-minute nap. तो उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट जो है थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। It was an intersection. The train tracks were intersecting a crossroad. तो वो जो है एक इंटरसेक्शन था जहाँ पे दो रेल पटरियाँ जो है आगे मिल रही थी। Exactly 10 minutes later, I looked at my watch. Exactly 10 minutes later, boo! जस्ट बराबर 10 मिनट बाद महान ने ये जो वहाँ पे आवाज़ सुनी। Exactly 10 minutes later, बराबर 10 मिनट बाद the train horn went off. Exactly 10 minutes later. बराबर 10 मिनट बाद जो है ट्रेन का हॉर्न बज गया अचानक से।
We were all laughing. Everybody knew it was Krishna. Everybody knew it. सभी को पता था ये जो है कृष्ण का आयोजन है, सभी को पता था। Krishna has an outrageous sense of humor. Try to understand. He has an outrageous sense of humor. So Krishna had fun with that, you know. भगवान कृष्ण का जो है बहुत ही हास्य स्वभाव है, तो वो इसी प्रकार जो है भक्तों के साथ। We all safely made it to San Francisco तो फिर जो है हम लोग for Rath Yatra. You know, Lord Jagannath wanted us to be there in San Francisco on time. तो जगन्नाथ जी ने हमें जब ये किया ताकि हम सही टाइम पे पहुंच सके। So the point is that Jayananda was right. तो मुख्य बिंदु ये है कि जो है दयानंद प्रभु जो थे वो सही थे। That Krishna protects the soul. कृष्ण जो है आत्मा की रक्षा करते हैं। Did I tell you about the boat in Mayapur? क्या मैंने आप लोगों को बोट के बारे में बताया जहाँ? Well, there was one of these huge Mayapur floods. तो मायापुर में जब एक बार बहुत बाढ़ आई थी। About every 10 years or so, there's a huge flood. Sometimes less. 10 साल पहले की बात है, बहुत The monsoons come down here. They built a huge dam on the Ganga, you know. तो उन्होंने बहुत ही बड़ा डैम बांध बनाया था गंगा के ऊपर। It's upstream from the mandir. तो वो जो है ऊपर की तरफ जा रहा था। So the water is going this way towards the mandir. और जो है वो मंदिर की तरफ आ रहा था। Well, what happens with all dams is that they have a capacity. तो वो जितने भी बांध होते हैं, जो उस बांध था उसकी एक कैपेसिटी, उसकी एक क्षमता थी। When the dam reaches a capacity, they're forced to open the floodgates. और जब वो जो बांध है उसकी जब क्षमता से ज़्यादा पानी आ जाता है तब उनको गेट खोलने पड़ते हैं उस बांध के। For fear that the dam will crack, because it could, you know, it's beyond its capacity. और ये हमेशा जो है डर लगा रहता है कि वो जो है पूरा बांध टूट सकता है, तो उन्हें गेट खोलने पड़ते हैं। Sometimes they give no notice to everybody downstream, all the villages and all that. Maybe you've seen the photos, you know. Maybe you've seen the photos of Chandrodaya Mandir during the flood. तो आप लोगों ने शायद फोटो देखी होगी चंद्रोदय मंदिर की बाढ़ के समय पे। So they open the floodgates and millions of gallons come out. और जैसे ही वो जो है जो गेट खोले उस बांध के तो बहुत सारा पानी, गैलन्स का पानी उगी। This was years ago. Did anybody see the pictures on the net? किसी ने देखी है वो फोटो चंद्रोदय मंदिर के उस समय? This is why Radha Madhava are so high up, because they've always knew about these floods. इसलिए जो है राधा माधव को इतना ऊंचा जो है ऑल्टर रखा है क्योंकि जानते थे कि वहाँ पे कभी भी बाढ़ आ सकती है। Lord Nrsimhadev is not as high up as Radha Madhava, so he's lower. नरसिंहदेव जो है वो इतने ऊंचे नहीं है, वो थोड़े नीचे की स्थिति में है। So they used to have to walk through the flood up to the neck almost, carrying the plates of bhoga for Lord Nrsimhadev, and do all the seva, whatever the seva they're doing for Lord Nrsimhadev. They had to walk at least shoulder level in flood water. तो उनको जो है अपने कंधे तक पानी आ गया था, तो उसी में चल के तैरते हुए जो है भगवान नरसिंहदेव के लिए भोगा लेके जाना होता था। Some devotees were offering their dandavat pranams as Ganga Devi. तो कुछ भक्त जो है दंडवत प्रणाम कर रहे थे नरसिंहदेव को गंगा देवी के अंदर। They're offering their dandavat pranams on the floor, but it's water, so that means they're offering their dandavat pranams in the water. तो वो जो है पानी के अंदर रहते हुए दंडवत प्रणाम कर रहे थे। Anybody see those videos? किसी ने देखा है वो वीडियो या? About every 10 years it happens. It's inevitable to happen again, because again there will be heavy monsoons, and again there will be flooding. ऐसा भविष्य में भी कभी भी हो सकता है कि बहुत जो है ऐसा वर्षा हो और बाढ़ आ जाए। So as a result of that same storm, there were some Vaishnavi and some children were in a boat. उसी समय जब बाढ़ आई हुई थी तब कुछ वैष्णवी और जो माताजी थी वो एक बोट पे थे अपने छोटे बच्चों के साथ। During the flood. और उस बाढ़ के समय one Vaishnavi wrote in on the net, "Pray for the victims of the flood." Oh, come on. तो उन एक माताजी ने जो है इंटरनेट पे पोस्ट किया कि आप जो है जो व्यक्ति जिनको कष्ट पहुंचा है उनके लिए आप प्लीज प्रार्थना कीजिए। What victims? तो आप उनको जो है विक्टिम क्यों कह रहे हैं? So-called victims died in the holy Dham, remembering the name of Krishna, no doubt. तो ये जो लोग उस घटना में मरे हैं, लेकिन हम देखना चाहिए कि वो लोग जब मतलब धाम में जो है शरीर छोड़ा in the Ganga, नाम जप करते हुए, in the Ganga. और गंगा जो इतनी पवित्र नदी है, So the boat sank. तो जो है उनकी जो बोट थी वो डूब गई।
The Vaishnavi and all the children, they went down and they did not know how to swim. और जो है जो माता जी जो अगर जो उस बोट पे सब बैठी थी वो सब डूब गई और उन्हें स्विम करना नहीं आता था उनके बच्चों को भी. So they all drowned. They left their bodies. और वो सब डूब गए और उन्होंने शरीर को त्याग किया. Excuse me, but what's the bad part? पर उसमें आप देखिए कि उसमें क्या गलत हुआ उनके साथ. Crying friends and relatives, that's all. तो They went back to Godhead. Spare me. They went straight back to Godhead. What is this? Pray for the victims वो जो है nonsense. सीधे भगवताम गए हैं उस धाम में जो उन्होंने शरीर छोड़ा तो हमें क्या उनके लिए दुखद नहीं थे. They went straight back to God. They may not even have gone. भगवताम चले गए. They may not even have gone to Gokula. तो वो जो है गोकुल भी नहीं गए होंगे इस भौतिक Everyone who संसार. dies in the Dham goes to Gokula anyways, but they dying in the Ganga completely filled up with Ganga water. तो वो जो जनरली जो धाम में शरीर छोड़ता है वो गोकुल में जाता है लेकिन वो तो जो गंगा में जो है In the holy डूबते Dham. हुए उन्होंने What's the bad part? धाम They के went. अंदर शरीर They went छोड़ा है. back to Godhead. तो उसमें क्या Certainly. गड़बड़ किया है वो सीधा का सीधा भगवत धाम गए होंगे गोलोक वृंदावन Certainly. निश्चित रूप से. So in this way, we see we should get out of the bodily concept. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हमें जो है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना चाहिए. Not that we're seeking out death. I mean, Prabhupada didn't like it when devotees died at the wheel, you ऐसा know. नहीं कि हम जो है चाहते हैं मृत्यु आ जाए हमें लेकिन और प्रभुपाद जी को भी अच्छा नहीं लगता था कि भक्त जो है जब बीमार रहते थे. But still, because they're devotees, you can't say it wasn't Krishna's plan. It was their karma, or beyond that, it was Krishna's plan. They were supposed to leave their bodies at that time. But Prabhupada didn't like because he didn't want the numbers of his devotees reduced. तो घटना से हम ये देख सकते हैं कि ये कृष्ण का बड़ी आयोजना नहीं थी लेकिन ये उन्हीं के जो कर्मों का उनको मिला था फल. So, in the last verse of the Gita, Prabhupada writes, Sanjaya says, wherever there is Krishna and Krishna's pure devotee, Arjuna, there will always be opulence, victory. तो आगे प्रभुपाद बता रहे पत्र में कि जब कृष्ण जो है भगवद गीता में लिखते हैं कि जहाँ भी कृष्ण होंगे और जहाँ अर्जुन होंगे वहाँ पे श्री विजय और ये सब अपने आप मौजूद रहेंगे. Extraordinary power and morality. और बहुत ही बल भी वहाँ मौजूद रहेगा और Tatra Shir Vijayo Bhutir. नैतिकता भी मौजूद रहेगी. Dhruva Nitir Matir Mama. तत्र श्री विजयो भूते. But because we are engaged in warfare with the forces of Maya, there will be casualties. तो हम जो है माया के प्रति जो है युद्ध ऐलान कर चुके हैं तो इसमें मृत्यु तो होगी ही होगी. Even Arjuna's son Abhimanyu, a 16-year-old boy, और अभिमन्यु जो स्वयं अर्जुन के पुत्र थे जो 16 वर्षीय थे केवल was killed at the battle of और Kurukshetra. वो भी जो है कुरुक्षेत्र में मारे गए थे. We should be prepared to protect the deities and always expect Krishna's और mercy. हमें जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए विग्रहों की प्रोटेक्शन के लिए और भगवान की कृपा पे आश्रित रहना चाहिए. Because we cannot do anything on our own क्योंकि without उनके him. बिना हम अपने से अपने बल पे कुछ भी नहीं कर सकते. So the next, I already told you that Prabhupada said nothing can stop this Krishna consciousness movement. तो आगे जो मैं पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी ने क्या बताया कृष्ण भावना मूवमेंट के बारे में. Then Krishna quotes that famous quote from Shastra, if Krishna was to kill someone, no one can save him. तो प्रभुपाद जी ने कोट करते थे बहुत ही फेमस जो वर्ड है कि अगर यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता. How does that go? Like a nursery rhyme. The Sanskrit? अच्छा राखे कृष्ण मारे के. Yeah. And the other part is मारे कृष्ण राखे के. Yes. Very famous. So here Prabhupada is quoting it in English. If Krishna wants to kill someone, no one can save him. तो प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं तो उसे कोई And if Krishna wants to save someone, no one can kill किसी को him. मारना चाहते हैं उसको बचा नहीं सकता और बचाना चाहते हैं तो उसे कोई मार नहीं सकता. For our parts, we should just be determined to carry out our mission against all opposition. तो हमारे पार्ट में हम ये कर सकते हैं कि हम जो है मूवमेंट को आगे से आगे बढ़ाएं. Demons, nuclear war, भले ही असुरों के विषय कितना भी प्रहार हो हमारे पे, coronavirus. कोरोना वायरस जैसे course. आक्रमण हो. Prabhupada didn't write that in the letter, but he might as well have written it in the letter. तो प्रभुपाद जी ने पत्र में नहीं लिखा है. Or whatever, the whole universe is finally subject to a certain annihilation by the will of Krishna. तो ये जो पूरा
भौतिक संसार है, यही जो है भगवान कृष्ण के आदेश पे संहार किया जाता है इसका। But devotional service is eternal लेकिन जो भक्ति है वो शाश्वत है and is the only way that one can save themselves from devastation. और ये एकमात्र तरीका है जिससे हम इस पूरे संहार से बच सकते हैं। We can preach all over the world that the only way to be saved from all collective and individual devastation तो हमें ये जानना चाहिए कि यही एकमात्र तरीका है इस मतलब कलेक्टिव और इंडिविजुअल लेवल पे भी, ताकि हम भगवान कृष्ण के भगवान का नाम जपना। So the only way we can be saved is to chant Hare Krishna. और इसका एकमात्र उपाय ये है कि हम भगवान के नाम का हरे कृष्णा का जप करें। In short, this world is very precarious. You know the word precarious? Shaky. तो ये जो है संसार बहुत ही दुर्घट मतलब बहुत ही डेंजरस स्थिति में है। Very precarious place. Sometimes it's described as water on a lily leaf. तो ये बहुत ही डेंजरस स्थिति में है और कभी कभी बताया जाता है कि ये लिली जो फूल है उसके ऊपर पानी की तरह है, कभी भी जो है वो At any moment it could fall off. कभी भी जो वो पानी है उसमें कभी भी नीचे गिर That's सकता our true position. That's our true position. है। तो ये जो है हमारी इस भौतिक संसार में पोजीशन। So therefore we should always chant Hare Krishna and seek Krishna's protection. तो हमें इसीलिए जो हमेशा हरे कृष्णा जप करना है और भगवान की कृपा को आकर्षित करना है। And like all his letters, she ends by saying, I hope this will meet you in good health. और जैसे प्रभुपाद जी के पत्र खत्म होते थे आखिरी में, तो वैसे ही अभी आखिरी में लिखते हैं कि और मैं आशा करता हूँ प्रभुपाद बता रहे हैं So now पत्र आपको मिले अच्छी स्वास्थ्य में मिले। nowadays with ashram devotees practicing yoga and so forth, तो अब हम देख सकते हैं कि जो आश्रम के जो भक्त हैं आजकल जो है योगा और ये सब की आदत कर रहे हैं। such things were not thinkable while Prabhupada was on the planet. ये सब जो चीज़ें हैं सोच भी नहीं सकते थे जब प्रभुपाद इस धाम पे थे। I mean, they would not even allow such things in the temple. और जो है मंदिर में तो उस समय भक्त ये सब अलाउ भी नहीं करते थे। That's before so many devotees were dying from disease, you see. तो इसीलिए हम देखते हैं कि उस समय इतने सारे भक्त जो हैं बीमारी से जो है मरते थे। I should know. I mean, I'm suffering from so much disease and trouble. महाराज कह रहे मैं स्वयं जानता हूँ कि मैं खुद इतना बीमारियों से ग्रस्त हूँ। If I had been practicing yoga at your age, how old is your body? कितना आपका उम्र क्या है? 24। 24? Oh, old man. तो महाराज कह रहे कि मैं अपने उम्र में अगर योगा की प्रैक्टिस करता So you guys are a little older then. तो आप लोग तो काफ़ी अब बूढ़े हो चुके हैं। How old? आपकी एज क्या है? He's more older. Huh? 27. Who, he's 27? He looks like a kid. तो महाराज कह रहे हैं कि ये तो एकदम छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, ये कैसे 27 साल के हो सकते हैं? He looks like a kid. He's 27? You're joking? He's 27 महाराज, yes. 27. Well, I guess Navayovana. तो महाराज कह रहे हैं एकदम नव योगेंद्र की तरह हैं, छोटे बच्चे लगते हैं एकदम। Anyways, the point is that Prabhupada says, I hope it meets you in good health. तो प्रभुपाद जी जो है ये कह रहे हैं पत्र में आखिरी में कि मैं आशा करता हूँ कि पत्र आपको Well, I think it was so routine, it was on every single letter Prabhupada said that. तो प्रभुपाद हर पत्र में आखिरी में ये लिखते थे। So I certain that most of the time the devotees missed the purport, missed it, could not, just took it lightly. तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ बहुत से भक्त जो है इसका असली मर्म जो है भूल जाते हैं। He expected we should do is everything to keep this body working for Krishna. तो प्रभुपाद जी जो है हमेशा हमसे आशा रखते थे कि हम जो है जो भी करने की आवश्यकता है वो करें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। If anybody ever questions practice of yoga in the temple and other things, कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई प्रश्न उठाता है कि योगा करना क्या सही है मंदिर में or some devotees are really into health, into Ayurvedic medicine, this and that. जने जो है आयुर्वेद का भी सहारा लेते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। Some foolish Krisadikari might think it was mundane. Why all this emphasis? भक्त होते हैं वो इसमें जो है इसका बुराई कर सकते हैं कि नहीं ये सब तो भौतिकता है। They might try to say they're all in Maya's neophyte मैं bodily, कह सकता हूँ कि वो सब जो भक्त ऐसा कह रहे हैं वो सब माया में है, bodily consciousness. सब देहात्म चेतना है। But then why did Prabhupada say, I hope it meets you in good health? लेकिन प्रभुपाद फिर यहाँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि जो है
आप ये जो पत्र आपको मिलेगा अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा। Furthermore, in the first canto of Srimad Bhagavatam, the very beginning of the Srimad Bhagavatam, और भागवतम के पहले स्कंद में एकदम शुरुआत में भागवतम के, remember what the sages at Naimisharanya say? और आपको याद है कि क्या नैमिषारण्य के सेजेस जो है वहाँ पे कहते हैं? किसी को याद है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन महाराज, सेल्फ प्रिजर्वेशन। No. Bhagavatam says, the sadhus, the sages, these great self-realized saints, says, I want you to desire only good health. तो भागवतम कहता है कि जो जितने भी सेल्फ रियलाइज वहाँ पे संत मौजूद थे, वो चाहते थे कि उनका मतलब जो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। So if somebody ever says, I mean, you're really in bodily consciousness, why are you paying so much attention to the body? This is nonsense. They're, detractors, critics. Some rascal will say like that. तो ऐसे कुछ मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये तो देहात्म चेतना में अपने शरीर का इतना ध्यान रख रहे हैं, गलत है ये सब। Then you can reply, then why did the sages, it must have been Sutta Goswami, that said, once you desire only good health. And then why a self-realized saint is saying like, वहाँ पे जो मतलब सेल्फ रियलाइज जो थे, वो जो संत थे, वो लोग कह रहे हैं कि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य की। full of Krishna Prem, why is saying like that, और क्यों जो है कृष्ण प्रेम जो है वो एक स्वास्थ्य के लिए, Unless it's important to take care of this body. For Krishna, it belongs to him. तो ये जो है शरीर का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कृष्ण की जो है संपत्ति है। This body is called yantra. और ये जो शरीर को बोला जाता है यंत्र, Car. एक गाड़ी के समान। Any car, vehicle we could drive around, and you could call it yantra. तो किसी भी चीज़ से हम इधर उधर अगर जा सकते हैं तो हम उसे एक गाड़ी कहते हैं। Any vehicle, palanquin. तो कोई भी गाड़ी हो गया या Palanquin means palanquin. पैलिंक्विन मतलब जो जिसमें उठा के It's a yantra, also yantra. पालकी। So, if you in the big airports, especially in the U.S. अगर आप यूएस में जो है, यूएस में बहुत ही बड़े-बड़े एयरपोर्ट होते हैं। You can rent a car at the airport. आप एक कार जो है वहाँ पे किराए पे ले सकते हैं। And you have a contract with them, you pay some fee. और आप उनके साथ जो है एक डील रख सकते हैं कि आप उन्हें कुछ लक्ष्मी दें। Does it belong to you? तो क्या वो जब आपने किराए पे लिए तो आपको आपकी है वो? Belongs to the company like Avis, Hertz, these big multi-billion-dollar तो वो companies. आपकी नहीं है, लेकिन वो जो है इन सब बड़ी-बड़ी जो कंपनीज हैं इनको उनकी। Do you have a right to trash it? तो क्या हमारा राइट है कि हम उस कार को जो है एक्सीडेंट करवा सकते हैं? Or do you have to take care of it? Your duty is to take care of it. You're paying money. Your duty is to take care of it. और हमारा जो है ड्यूटी हमारा कि हमें उस कार को जो है रक्षा करनी है। Similarly, this yantra of this body belongs to Krishna. उसी प्रकार से ये जो यंत्र है, जो शरीर है, ये कृष्ण को प्रॉपर्टी है। Vasudeva Sarvamiti. Krishna owns everything. He's the proprietor of this body. तो भगवान जो है वो सभी के प्रोप्राइटर हैं और शरीर के भी मालिक वही हैं। Because it does not belong to us, it belongs to Krishna. तो वो हमें नहीं बिलोंग करता है, भगवान। Therefore, we have to take care, just like you have to take care of a rental car. It does not belong to you. You have to take care of it. You have to maintain जिस it. प्रकार हमें किराए पे जो है गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें ये शरीर का भी ध्यान रखना है कि कृष्ण की If you rent it for a period of time, you have to put oil in the motor. तो यदि हमने कुछ समय के लिए किराए पे लिया है उसको, तो हमें उसमें जो है घी और तेल जो है डालना होता You है। have to see to it that there's grease in the wheels. और उसमें जो है ग्रीस भी लगाना होता है उसके पहियों में। Of course, you have to see there's petrol in the tank. तो और जो है उसके गाड़ी में जो है पेट्रोल भी भरना होता है, डीजल। It doesn't belong to you. तो वो जो है हमें बिलोंग नहीं करता। What your duty is to maintain it. वो भले ही हमारी नहीं है, लेकिन हमें फिर भी उसको जो है Similarly, our duty is to maintain this body, which does उसी not, प्रकार जो है हमें इस शरीर को भी जो है संभाल के रखना that है। does not belong to us. ये हमारी संपत्ति नहीं है। Okay, we'll stop there. तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। Any questions, comments? किसी का कोई प्रश्न है तो वो आके पूछ सकते हैं। भक्ति माधुर्य गोस्वामी महाराज की Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.